Okay, this is going to be live on your screens. Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Russia to attend the 16th BRICS summit in Kazan. This marks Prime Minister Modi's second visit to Russia this year, following his trip to Moscow in July to attend the India-Russia annual summit. Apart from the BRICS summit, Prime Minister is also expected to hold a series of bilateral meetings, including with the Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर. What you can see on your screens right now is live visuals from the BRICS summit. PM Modi is meeting Russian President Putin for a bilateral meet in Russia's Kazan, like we told you, ahead of the summit, and these are live visuals on your screens. सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ. आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर. This is Prime Minister's second visit, the Indian Prime Minister's second visit to Russia in 2024. और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं. खासतौर पर ये What you can see on your screens are live visuals from the 16th edition of the BRICS summit that is currently underway in Kazan. This marks Prime Minister Modi's second visit to Russia this year, following his trip to Moscow in July to India-Russia annual summit. We also have Siddhant Sibal, who's joining us live on the broadcast, just trying to ensure that we've established connection with him, with the team. Siddhant, if you can hear me, get us the latest from the ground there. What is happening over there? Give us a lowdown on it. Narendra Modi and the Russian President Vladimir Putin right now are holding bilateral meeting, and in the initial conversation the Russian President recalled the previous visit of the Indian Prime Minister Narendra Modi to Moscow and highlighted the special relationship between India and Russia. Right now the Prime Minister of India, Narendra Modi, is speaking. If my camera person can in fact showcase you the views from the media center where the Indian Prime Minister and the Russian President's bilateral meeting is being live telecasted, and you can say there are several media persons who are sitting and hearing the comments. The Indian Prime Minister, of course, mentioning the opening of the new consulate. Remember, the Prime Minister, during his earlier visit to Russia in Moscow, said that a new consulate will open here in Kazan. Roughly around 1,000 Indian students are present here in this city. From what we understand, Prime Minister Modi is speaking right now. Let's just go across to him. For our viewers, we have live visuals. He's about to speak during the bilateral with President Putin. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом, и после того, как откроется генконсульство Индии в этом городе, наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है. जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है. Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं. 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है
और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. You just heard Indian Prime Minister Narendra Modi speaking with Russian President Vladimir Putin. Prime Minister Modi was talking about the strengthening in every area of the relations between Russia and India after the meeting of the dignitaries in Moscow earlier in the year. He did say that he was excited to be a part of the BRICS summit. And he also spoke very briefly about the Russia-Ukraine conflict. He said that India believes that the conflict should be resolved peacefully, and India gives humanity a priority above all. Prime Minister Modi still speaking. We will try and connect with Siddhant Sibul and try to get you the latest from on ground at the BRICS summit. Let me reiterate, this is the 16th edition of the BRICS summit. Of course, lots on the agenda there. The themes include economic cooperation, reforming global financial systems, and of course, India sees BRICS as a platform to reform global financial institutions like the World Bank and the IMF, ensuring fairer representation for emerging economies. For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.